Good evening, everyone, and welcome to my NCERT Class 10 History class. That is now the name of this chapter is Nationalism in India. I am Sudhanya Senagupta. Let's start the topic. अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो नेशनलिज्म इंडिया के बारे में बहुत किताब है जो आप अगर इन फ्यूचर हिस्ट्री को लेके पढ़ना चाहते हैं इंडियन हिस्ट्री को लेके तो आप पढ़ सकते हैं इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड एज द कंसेप्ट ऑफ ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच कैंपेनिंग दैट इज फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ था उसी को इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट हम बोलते हैं This is very much inclusive of the all people of India despite their diverse ethnic, linguistic and religious background. When did the nationalism start in India? So the last decade of 19th century saw the emergence of nationalism in India. The Indian Congress, National Congress was established in 1885. It soon became the spread of the Indian nationalist movement. The First World War, Khilafat and non-cooperation movement. So nationalism के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया का क्या पब्लिक का क्या सोच था खिलाफत मूवमेंट क्या था एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था गांधी जी वांटेड टू वाइडर मूवमेंट बाय द uniting Hindu and Muslim at the Calcutta session of the Congress session in September 1920. Mahatma Gandhi convinced to start the non-cooperation movement in support of the Khilafat movement as well as for the Swaraj movement. Gandhiji launched the Khilafat and non-cooperation movement. The Khilafat movement, which is continued till 1924. The main thing is to oppose the move to the British government to abolish the Ottoman Khilafat after the Turkish Empire was dissolved in the aftermath of World War I. So इसी के ऊपर बेस करके खिलाफत मूवमेंट को हम लोगों के देश में गांधी जी ने सपोर्ट किया था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन यूरोप इन 1914 इट्स extent was over the entire world including Asia, Africa and the Pacific. This period witnessed innovations in the methods of the destructions and defense, which in turn turned to the period of the name as First World War. The Khilafat movement, that is, it is also known as the Indian Muslim movement in 1919 to 1924 was the pan-Islamist political protest campaign launched by the Muslims of British India led by the Shaukat Ali Maulana Muhammad Ali Zohar, Hakim Azmal Khan and Abul Kalam Azad to restore the Khilafat of the Ottoman Khilafat. So ये जो नाम है ये जैसे कि शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली जौहर हकीम अजमल खान एंड अब्दुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद ये जो नेम है ये नेम को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा So इसके बाद जो आता है when was Rowlatt Act passed? Rowlatt Act February 1990 legislation passed at the Imperial Legislative Council, the legislature of British India. The act allowed to the certain political cases in the tried without juries and permitted to the interment of the suspect without trial. So इसका मतलब क्या है ब्रिटिश रूलर कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी परमिट एनी जूरीज एनी विदाउट एनी ट्रायल फ्रॉम सिंपल इंग्लिश विकिपीडिया से हम लोग जो देखते हैं
the anarchical of the revolutionary crimes in 1919, popularly known as the Rowlatt Act, इसके against में भी हम लोगों के देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. Was law passed in 1919 by the British India. Under the law, the government got many powers, including the ability to arrest people and keep them in prison without any trial. The idea of Satyagraha. The idea of Satyagraha is basically emphasize the power of the truth and the demand of the search of the truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle against the injustice, then the physical force was not necessary to fight to the opposite. That means सत्याग्रह का गांधी जी का मेन थीम था, जैसे कि अगर without any struggle, without any injustice, without any physical force, अगर कोई आदमी अगर मेरा बात मान रहा है तो उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ मूवमेंट की तरह. सो दिस इज कल सत्याग्रह या आप बोल सकते हैं कि अहिंसा जो मूवमेंट था गांधी जी का वही है सत्याग्रह. सो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं गांधी जी का. ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है. Satyagraha was the noble method to the mass agitation which stressed the principle of the truth, tolerance, non-violence and peaceful protest. Actually गांधी जी ने जो करना चाहते थे that is सत्य के ऊपर चलो, टॉलरेंस, जैसे कि आप खुद का जो सहन का जो क्षमता है उसको बढ़ाओ, नॉन वायलेंस, वायलेंस के रास्ते पे मत जाओ, एंड पीसफुली बातचीत करके अगर कोई हल निकलता है तो वो गांधी जी सपोर्ट करते थे. Satyagraha supported that to the true cause and the struggle against the injustice physical force and not to record the fight of the opposite. So गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोगों को मारपीट करना या फिर किसी को कत्ल कर देना ये जरूरी नहीं है. अगर हम बातचीत करके अगर उनको मनाना अगर हम लोगों के तरफ से मुमकिन होता है तो सत्याग्रह is successful. So Gandhian philosophy of Satyagraha is the natural outcomes of the supreme concept of the truth. Satyagraha means that is the exercise of the purest soul force against all injustice, oppression and exploitation, suffering and the trust are attributes of the soul forces. That means एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, इनजस्टिस नहीं है. कभी कभी जैसे लगता है ऐसे अगर नॉन वायलेंस के बारे में बात करेंगे तो अगर कोई आपको कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है फिजिकली या फिर वर्बली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसे फिजिकली और वर्बली ह्यूमिलिएट करेंगे. क्योंकि पहली बात तो यही है कि अगर हम सेम काम अगर करेंगे तो हम उनके ही जैसे बन जाएंगे, तो हम लोगों का जो खुद का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रहेगा. कभी कभी नॉन वायलेंस काम में नहीं आता, ये बात सही है. कभी कभी नहीं आता, वायलेंस की जरूरत पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप लाइफ के बारे में सोचे, मैं सिर्फ नेशनल मूवमेंट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, गांधी जी के थॉट्स के बारे में बोल रही हूँ. अगर आप लोग लाइफ के बारे में सोचे तो नॉन वायलेंस पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो इफेक्टिवली बहुत ज्यादा ये काम आता है. बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है एक प्रोटेस्ट के लिए, बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है. Why non-cooperation? Non-cooperation movement क्यों गांधी जी to induce that is the British government of the India to the grand self-government or the Swaraj to India. It was one of the Gandhi's first organized act to the large scale of the civil disobedience. That means सत्याग्रह, non-cooperation movement, जैसे कि असहयोग आंदोलन, जिसको हम असहयोग मूवमेंट भी बोल सकते हैं, 1920 से 22 तक ये चला था. जैसे कि
गवर्नमेंट जो भी करेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। जैसे गवर्नमेंट अगर ब्रिटिश लोग बाहर से हम लोगों को जो टेक्सटाइल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर बाहर से बाहर का कपड़ा अगर वो इंडिया में सप्लाई करते थे तो गांधी जी खादी उसके सामने रखा था। यही एक प्रोटेस्ट है, ये भी प्रोटेस्ट है। जाहिर सी बात है कि हम आप लोगों का सामान नहीं लेंगे, ये सबसे बढ़िया प्रोटेस्ट है, क्योंकि इससे ब्रिटिश का इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर सप्लाई क्यों करते थे, वो इंडिया का मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ पर सप्लाई करते थे। तो सप्लाई क्यों करते थे? क्योंकि ताकि वो मुनाफा हो। तो गांधी जी ने क्या इंट्रोड्यूस किया? खादी। खादी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो क्या हुआ? ये भी तो एक प्रोटेस्ट ही हुआ। प्रोटेस्ट, बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ ये। सो कॉजेस क्या क्या है? दैट इज जालियनवाला बाग मैसाकर्स जो है वो बहुत ही दर्दनाक एक हादसा था। जैसे कि मतलब ये डिस्क्राइब ही मतलब करना ही एक अपने आप में ही बहुत खराब लगता है। That is the resultant of the Punjab disturbance, that is dissatisfaction of Montagu Chelmsford, Rowlatt Act, Khilafat जो मूवमेंट हुआ था। On 13th April, Jallianwala Bagh massacre happened, which further spread violence to the brutal repression, looking the violence and British acrobatics. Mahatma Gandhi felt to need to launch a new movement, that is इसके लिए ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। That is the rebellion of the countryside. Rebellion of the countryside from the cities to the non-cooperation movement spread into the countryside. It is due into the fold of the struggles of peasants and the tribal group के अंदर भी ये फैल गया था। Peasants has to the beggar to the work of at landlord farm without any payment. सो पेजेंट्स क्या करते थे? वो लोग काम करते थे विदाउट एनी पेमेंट, उनका खुद का कोई जमीन भी नहीं होता था, वो लैंडलॉर्ड्स के पास ही सब जमीन गिरवी रखते थे। तो ऐसे जैसे कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, जैसे कि गांधी जी के साथ पूरा देश जुड़ गया था। यही बात है, यही कैरिज्मा है गांधी जी का। तो गांधी जी के साथ पूरा देश, सभी का, ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो सभी के लिए था। This is Swaraj in plantations, like the response of the enthusiastically call, that is the non-cooperation and the boycott movement that saw that is the movement way, that is the freedom from foreign dominations. The plantation workers in Assam, in their own understanding of the Mahatma Gandhi and nation of Swaraj, for plantation worker Assam, freedom meant to the right of for more freely out of the confined space in which they were enclosed. Towards civil disobedience. क्या है? In February 1922, non-cooperation movement was withdrawn by the Mahatma Gandhi. The felt that is the turning violent. ये चौरी चौरा में एक वायलेंट का केस हुआ था, जिसके वजह से महात्मा गांधी ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको withdraw कर लिए थे. Some of the leaders wanted to the participate of the elections to the provincial council. Swaraj party was from the C.R. Das and Matilal Nehru. In the late 20s, Indians politics again shaped because of the two factors. The first effect is the worldwide economic depression, and the second effect is the falling of agricultural price. The statutory commission was the setup look into the functioning of the constitutional system in India and the suggest changes. In 1928, Simon Commission arrived in India and it was greeted by the slogan "Go back, Simon." ये हम लोग जानते हैं. That is in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru of Lahore Congress formalized the demand of the Purna Swaraj.
कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस में उन्होंने बताया। एंड और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 26 जनवरी, वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। The Salt March and Civil Disobedience Movement. On 31st January 1930, Mahatma Gandhi sent to the letter to Viceroy Arvind starting 11 demands. Among to the demands of the most staring of all the demand abolition of the salt tax, which is consumed, that is the rich and the poor. The demands needed to be the fulfilled 11 March and the else of the Congress would start the civil disobedience movement. That is the famous Salt March. इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं. Mahatma Gandhi, accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji Ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi. On 6th April, he reached Dandi and the ceremonially violated of law manufacturing salt by boiling sea water, क्योंकि ब्रिटिश ने जो सॉल्ट मार्केट में दिए थे उसका टैक्स लेके आम आदमी के लिए सॉल्ट खरीदना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए महात्मा गांधी ने ये स्टेप लिया। एंड उन्होंने क्या किया, सी वाटर से सॉल्ट कैसे खुद मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। दिस मार्क दैट इज द beginning of the civil disobedience movement. The limits of the civil disobedience, that is the Dalit addressed as untouchables, were not moved to the concept of the Swaraj. Mahatma Gandhi used to call them the Harijans or the children of God, without whom the Swaraj could not be achieved. He organized Satyagraha for untouchables, but they were keen on the different political solution to the problems of the community. They demanded reserve seats of the educational institution and the separate electorate. So the limits of the civil disobedience को लेके गांधी जी ने क्या सोचा था, उन्होंने ये दो दलित्स जो है, अनटचेबल्स जो पीपल है, उनको उन्होंने हरिजन कह के सम्मानित किए थे। दैट मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड विदाउट हुम स्वराज मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने ये भी डिमांड किए थे, डिमांड नहीं, उनका मान्यता था कि इन लोगों के लिए जो दलित्स है, जो समाज से बिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एजुकेशन एंड जॉब साइट में सेपरेट जो रिजर्व सीट है वो होना चाहिए। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930, clashed with the Mahatma Gandhi at the second round table, the conference demanding the separate electorate for Dalits. The Pune Pact of the September 1932 gave the depressed class, that is the legislative council, reserve seats, that is in the legislative council. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, Muslim felt the aligned to the Congress, due to which relation between the Hindu and Muslims. The sense of the collective belonging, nationalism spread. People believed that the all part of the same of the nation, history and the fiction, folk roles, songs, everything are same. 1970s, Bankim Chandra Chattopadhyay created image on 1870s. He wrote Vande Mataram, that is the human, that is the hymn to the motherland. अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो यही बात करेंगे, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century various groups, classes, India came together, struggle for the independence. The Congress under the leadership Mahatma Gandhi attempt to the resolve differences and ensure that the demands one group did not align another. The other words that was the emerging was the nation with many voices wanting to the freedom in the from the colonial rule. ये जो कॉलोनियल जो रूल था, ब्रिटिश ने जो शुरू किया था, सभी लोग, लगभग पूरे देश के लोग ही उससे मुक्ति चाहते थे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया,
लेकिन इंडिया की बात है, नेशनलिज्म की बात है, तो ये तो होना ही है. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.